Good morning, my dear students. I am here again with another topic of again the same subject, that is English grammar for class 6. The topic is the noun gender. You people had earlier studied about it. Even in Hindi grammar also you had studied. It is termed as ling. So the definition is, as in the previous video you had seen, I had taught you noun, and the definition of the noun was, a noun is the name of a person, place, animal or things. But a bit difference is here that you will see. A noun may indicate the gender of the person or animal. In gender you will learn about that a noun, a naming word, it indicates the gender of a person or animal. That means it may either be a male or a female. So according to that, we can say that the noun gender, it clarifies the difference of being male and female of a noun. Either it can be a person or animal. So the definition may be the difference of the being male and female is called the gender or the noun gender. आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा लिंग, जो पुरुष और स्त्री जाति के होने का बोध कराता है. द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. देयर आर 4 genders in English. They are as follows. The first one is masculine gender, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग. द सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है. द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर. दीज आर द 4 मेन जेंडर्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट दिस. So here it is. The first one is masculine gender, also termed as, in Hindi grammar it is termed as pulling. The definition is, a noun that denotes a male person or animal is said to be of the masculine gender. I have mentioned some examples also: man, boy, king, lion, cock, etc. All these indicates the words that belongs to male, और we can say that ये सारे words है जो वो indicate कर रहे हैं कि these are males पुल्लिंग, जिससे कि पुरुष जाति के होने का बोध होता है. Second one is the feminine gender. It is termed as striling in Hindi grammar. You had studied earlier, I know about it. So definition is, a noun that denotes a female person or animal is said to be of the feminine gender. वो सारे संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति के होने का बोध होता है. आप लोगों ने ऐसा हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में. The same thing is here. So I had mentioned some examples also: woman, girl, queen, lioness, hen, etc. These all words indicate that these nouns belong to female person or animal, or this denotes whether it is a female. I hope you people are getting all the things. Then the third one is the common gender. Common gender is commonly used for both, for male and for female, both. दोनों के लिए यूज़ होता है. आपका पुरुष के लिए भी और स्त्री जाति के लिए भी यूज़ होता है ये. So the definition is, the noun that can be either a male or a female. ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. Person or animal is said to be of the common gender. ये दोनों के लिए यूज़ होता है. For example, doctors. A lady doctor is also termed as doctor. A gents doctor or male doctor is also termed as doctor. Students, a girl student is also termed as student, and a boy student is also termed as a student.
बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हम लोग स्टूडेंट्स ही बोलते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ योर चाइल्ड. जो आइदर द चाइल्ड बी अ बॉय और अ गर्ल. देन पेरेंट्स हियर means both of your parents. That means your father and your mother both. Teacher, your ma'am and your sir both are termed as teachers. Your friends, even either it may be a boy or a girl. Boys will also say that they have friends and girls will also say that they will have friends. अगर गर्ल्स की कोई गर्ल दोस्त है तो उसको भी वो फ्रेंड ही बोलेंगे. बॉय का अगर दोस्त लड़का है तो उसको भी वो फ्रेंड ही बोलेंगे. Then the next one is the neuter gender, a noun that denotes a thing that is neither male nor female. यहाँ पे जो ना मेल डिपिक्ट करता है, जो ना फीमेल डिपिक्ट करता है, is said to be of neuter gender. That doesn't belongs to any particular or depicts any particular gender, neither male nor female. Such nouns are termed as neuter genders. We have to switch to the another page. So here it is. Mostly this you can see in such nouns which does not have life, or we can say that non-living things. जिनमें लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं, उनके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर्स मोस्टली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पून, पेन, वॉल, हैट, पेपर्स. दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल्स. दे आर टर्म्ड अंडर द न्यूटर जेंडर्स, एंड मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर दिस टर्म, दिस जेंडर, न्यूटर जेंडर. आई होप यू पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग. If you have any queries or any doubts, please see to it. I will try to clear when the school will reopen. So up till here we will close it. Then the next topic is your formation of feminine genders. How it will form from the given masculine gender, how feminine gender is formed. स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में किस तरह से बदला जाता है या फिर किस तरह से फॉर्मेशन होती है certain words की, उसका about that you will learn from here. There are 3 ways of forming the feminine genders. I have mentioned the most important ones firstly, not the all, so that you people will get it clearly. आप लोग confused ना हो इसलिए. So the first one is by using a different word. बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, फेमिनाइन में बिल्कुल डिफरेंट. फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन हियर मैन. इट इज़ मैन, आदमी. इसका मैस्कुलाइन जेंडर पुलिंग होता है ये. द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मैन इज़ वुमेन. द टोटली डिफरेंट वर्ड इज़ यूज फॉर बोथ द जेंडर्स. देन वुल, योर मैस्कुलाइन जेंडर, एंड इट्स फेमिनाइन जेंडर इज़ काउ. The next rule is by adding a word before or after. पहले या बाद में किसी भी वर्ड के हम लोग ऐड करके we used to form masculine or feminine. For example, the word here is goat. The common word here is goat. If it is masculine, we will add he, and for a feminine, we will add she. So the thing will go like this: he goat on, and its feminine will be she goat. The next one is father. So stepfather, and its feminine form is stepmother. Third one, here some further description has been given there. By adding letters, किस तरह से letters add करके भी gender change होता है. The first one is in third part we have 2 to 3 parts further. Third part. So according to that, third part का जो A number है, it describes that by adding ESS to the masculine gender. जो masculine gender दिया रहता है उसमें ESS word add करके हम उसका feminine form जो है वो बनाते हैं. The example I had mentioned here, you people will get it clearly with the example lion. Lion again in the feminine, but we had added ESS, so it has become lioness. Again poet, masculine, with poet we had added ESS, so it had became feminine. I hope you all are getting it. I'm trying my best that you can
acquire more and more knowledge from the video I am doing here for your. So the B number is by adding ESS to the masculine after dropping the vowel of the last syllable of the word. यहाँ पे जो है वॉवल जो है होता है जो मस्कुलाइन जेंडर में, उसमें जो लास्ट सिलेबल में जो वॉवल होता है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं. देन वी विल ऐड एंड आफ्टर दैट वी यूज टू ऐड ESS. द मस्कुलाइन जेंडर हियर द एग्जाम्पल इज कंडक्टर एंड द फेमिनाइन फॉर्म इज कंडक्ट्रेस. सो TOR, आर से पहले यहाँ पे आपको ओ वॉवल दिख रहा होगा. हाँ, बट व्हेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू और चेंज इट इनटू फेमिनाइन जेंडर, सी टू इट, यहाँ जो वॉवल है आर से पहले ये हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है. देन वी हैड एडेड ESS. द सेम इज विद द वेटर, WAITER, वेटर TER. आर से पहले ई है, ई इज योर वॉवल. ओह सॉरी, आई हैवंट मेंशन्ड हियर वेट्रेस, WAITRESS. I had left this for you all ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए. इसमें आर से पहले ये वॉवल था ई, यहाँ से हम लोगों ने इसको रिमूव किया है एंड आफ्टर दैट वी हैड एडेड ESS. I had particularly left this for you all only so that you may get it clearly. Then the last one is here by adding ESS to the masculine in a less regular way. Here the form changes. We add ESS but the form changes. Come to the example, you may get it by example. In masculine it is Duke and the feminine form is Duchess. Duke has changed into Dutch, then we had added ESS to it. Then the next example is Master and it has changed into Mistress. Master, the less regular way. So I hope you will get all the things clearly, and the video is about almost over, and I will send a link into the Steno app with the homework. Thank you.